Good morning students, I am Ananta, your SST teacher. Today I am going to teach class 7 geography. Chapter 1, our topic is environment. Environment, तो environment क्या है? What is environment? So anything that we see in our surroundings is called environment. जो भी हम अपने आसपास देखते हैं वो सारा हमारा environment है. In our surroundings many things like trees, plants, animals, all things are our environment. All things, even living things and non-living things, both makes our environment. Then normally we can say that anything anything that we see in our surroundings is called environment. For example, plants, vehicles, trees, and many things that we see in our surroundings. Your house is part of environment, roads, vehicles, even this board is also a part of our environment. Everything that you see, birds, you see everywhere birds, this also make our environment. तो everything that you see, हम अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हैं वो सारी हमारी environment को बनाती हैं. All makes our environment. Environment, living things and non-living things, both makes our environment. Environment ऐसा नहीं कि केवल only living things make our environment and non-living things doesn't make our environment. Both living things and non-living things both makes our environment. Environment consists of both parts, living things and also non-living things. Environment normally we can say that our in the normal days our environment is regularly changing. So the question is why our environment is changing? Why हमारा environment जो है वो लगातार क्यों चेंज हो रहा है? हमारे environment के चेंज होने का पीछे का रीजन क्या है? तो our environment changes due to our needs. और हमारा जो environment है वो लगातार चेंज हो रहा है हमारी needs की वजह से. हमारी जो जरूरतें, हमारी जो needs है उनकी वजह से हमारा environment जो है वो लगातार रेगुलरली चेंज कर रहा है. इन्वायरमेंट हमारा चेंज कर रहा है इन सारी चीजों से. फॉर एग्जाम्पल पहले हम जो हमारे यहाँ पे पहले बहुत सारे फॉरेस्ट होते थे, हमने उन फॉरेस्ट को कट करके वहां पे बिल्डिंग्स बना दी, अपार्टमेंट्स बना दी, अपने लिए रहने के लिए नए नए जगह बना ली. तो हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो गया. फॉरेस्ट से हमारा इन्वायरमेंट अब वहां पे बदल गया, अब वहां पे बिल्डिंग्स आ गए. पहले हम साइकिल से सब घूमते थे लेकिन हमारे नीड्स बढ़ी, हमने साइकिल की जगह पे कार यूज किया. दिस ऑल्सो चेंज आवर एनवायरमेंट. सो आवर नीड्स आर द मेन रीजन ऑफ चेंजिंग एनवायरमेंट. Our needs increase day by day, and environment is also changing day by day. But this needs is harmful for our environment. These needs are very harmful for our environment. For example, when we drive a car, this ये स्मोक को जनरेट करता है और इसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है. एयर पोल्यूशन की वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको हार्म होता है. तो नीड्स चेंज एनवायरनमेंट एंड वी आल्सो हार्मफुल एंड दिस इज आल्सो हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट. हम जो भी चीजें बना रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, उसकी जगह पे हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ये भी हमारे लिए हार्मफुल होता है. ये हमारे नीड्स को फुलफिल कर रही है लेकिन हमारे नेचर के लिए ये हार्मफुल है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए ये सारी चीजें हार्मफुल है. So what is the next is this environment. What is the proper definition of environment? Environment का proper definition क्या होता है? तो all the places, things, animals
एंड नेचर मेक्स आवर इन्वायरमेंट। जितनी भी प्लेसेस हैं, जो जगह हैं, जो थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं, नेचर है, ये सारी चीजें मिलकर हमारे इन्वायरमेंट को बनाती हैं। प्लेसेस, थिंग्स, नेचर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास की जो भी प्लेसेस हैं, थिंग्स हैं, नेचर है, ये सारी चीजें मिलकर हमारे एनवायरनमेंट को बनाती हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास का ये प्लेस होना चाहिए, नॉन लिविंग का नहीं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि जीवित है उसके आसपास का जो प्लेस होता है, उसके आसपास का जो थिंग्स होता है, उसके आसपास का जो नेचर होता है, वो सभी चीजें मिलकर एनवायरनमेंट को बनाती है। Environment consists of two phenomena. Environment has two phenomena. Environment has two phenomena: human-made and natural. Human-made environment and natural environment. All human-made environment, all things that are made by humans are human-made environment, and nature that are created by nature are called natural environment. Natural environment has two parts. Natural environment has two parts. First, biotic. First is biotic and second is abiotic. What is abiotic? What is biotic and what is abiotic? So biotic, all living organisms are part of biotic, and abiotic, all non-living things are abiotic. But both living things and non-living things both are natural, not human-made. For example, biotic, humans. Biotic, humans and plants both are living organism and also natural. Natural, not किसी भी humans को lab में नहीं बनाया जा सकता है. They are natural and they are living things. Plants are also natural things. They are created by nature. So both are human and plants are biotic. And abiotic consists of mountains, rivers. These are non-living things but are made by nature. So all non-living things made by nature are abiotic, and all the living things that are made by nature are biotic. So natural environment has these two parts. And human-made, example, car, this board, all are made by humans. So environment has two parts, human made and natural. And there is one more part, that is humans. Human means it's me, it's you, every humans are the part of humans, and this is the most important part. And humans make human environment. Human-made environment, natural environment, and human-made environment. Human-made environment means humans. Human consists of all humans' activities, interactions, activities that humans are doing. Humans' religions are under human. All humans' activities are come under this category, human environment. So today we understand what is environment components, and the next topic we will understand natural environment.